Yesterday also the concerned our collector visited the same plots. On whose instructions he visited? On whose instruction? We sent him information. The High Court sent him information. Where is the collector? Where is the collector? Yes, Mr. Sharan. Good morning. Is the dress code? Is this the dress code? What is provided in the dress code? Have you gone through the rules of the court? What is the dress code? Can you appear like this? Infrastructure में तो 15 टन ट्रक का कूड़ा निकला वहां से. क्या था ये सिम्स? ये क्या था सिम्स? आप बताइए. ये क्या था? ये सिम्स इस तरह का होता है? सर मैं कुछ बोलूं सर? बोलिए. हम तो बोले, हम आप दोनों ही बोलेंगे. हम क्या करेंगे? I saw a newspaper, a lady who has came from the place from at that airport, Raipur airport. She was in a family where she was having a child. She sat on a car. She was asked to come outside the car because of that some उनका कुछ prepaid और सबका कुछ problem था वहां पर. And she was not allowed to take another car. 7 days back. Yes, 7 days, another car. And she has to walk down for about 2 kilometers in that manner. What is going on? क्या कहते हैं? ये क्या हो रहा है? बताइए. मतलब ये सब चीजें क्या कर सकते हैं अपन? बताइए. अब you have to see. Yes, Mr. Pradhan. Lordship. क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने? That I was also going through that, Lordship. The parties are present today. Yesterday also the concerned our collector visited the same Lordship. On whose instructions he visited? On whose instruction? We sent him information. The High Court sent him information. Where is the collector? Where is the collector? Yes, Mr. Sharan. Good morning. Is the dress code? Is this the dress code? What is provided in the dress code? Have you gone through the rules of the court? What is the dress code? Can you appear like this? Sir, I was in inspection, sir. हाँ. तो at least you should have a tie. तो आपके चेंबर में होगी ना? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, है ना? रूल्स ऑफ द कोर्ट है, समझे ना? उसको देख लीजिए कैसे अपीयरेंस होता है, है ना? ठीक है, यू मे बी इंस्ट्रूमेंट बट आप क्या दिक्कत होती है? एक टाई तो लगा के आ सकते थे. यू कैन नॉट कम लाइक दिस. चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दिया. अच्छा, सी टू इट. वेयर इज द लास्ट ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट? whereby the chief secretary was directed to monitor the situation. What the chief secretary was doing? देखिए, ये तो आज का है. देख रहे हैं ये दवाइयां क्यों नहीं मिल रही हैं अस्पतालों में? Whom you are feeding? Whom you people are feeding? Why is this? और कल का जो आइटम था जिसमें सिम्स का लिए था, उसमें that जो women who were in family way, they were standing in queue and they were asked to go back. Why did you not responded when you have seen? आप रोज तो न्यूज़पेपर में अपनी फोटो तो देखते हो ना सर, कि where do you go? सर, आप जाइए, फोटो खिंचवाइए, कोई एतराज नहीं है. लेकिन आप जब जाते हैं तो उसके बिहाइंड द बैक बाद में क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, कितनी इंप्रूवमेंट हो, ये आपका देखने का धर्म है कि नहीं है? है ना? समथिंग. हाँ, यस सर, आज मैं सुबह फिर सिम्स गया था कि कल जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसको कितना कंप्लायंस किया इन्होंने. हाँ, और वो इंस्ट्रक्शंस आप कब गए? व्हेन द चीफ सेक्रेटरी कॉल्ड यू अप सर, आफ्टर द रजिस्ट्रार जनरल सेड, सर, yesterday we were going to sit, we were going to form the court, सर, the court was to assemble, but we asked the registrar general to inform the law secretary, show him this news item. He was being directed to personally monitor the situation, सर, and he failed to do so. It is a contempt of the court. When we are closing for the winter vacations, last order you see, have you gone through the last order? You see through the last order. Last order comes. Last order देखिए. Last order देखिए. एक केस. हाँ, ये देखिए. Come show it to the collector. 19/12 का. लास्ट दिखाइए प्रधान साहब. 19/12 का है आपके पास, देखिए. 19/12 वाला कोर्स बंद हो रही थी उस दिन. ये दे दो, दिखा दो, जस्ट शो इट टू.
सर कुछ मैं बोलिए बताना बोलिए चाहूंगा। बोलिए, आप ही से तो मेरे को सुनना सर, है, बाकी तो ठीक सर एसीएस हेल्थ डेली सर रिव्यू कर रहे हैं सर तो आपके ऐसे इस हेल्थ के एसीएस हेल्थ के रिव्यू करने के बावजूद ये पोजीशन है सर मैं कुछ बताना चाहूंगा सर। सीएस सर ने आपके ऑर्डर के बाद सर फिर सर ने वीसी ली थी सर। हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर लगे सर। पीडब्ल्यूडी, सीजीएमएससी, नगर निगम, मतलब हम लोग सर सब लगे हैं सर। इसमें सर 3 इशू है सर, मैं बताना चाहूंगा सर, थोड़ा डीप में जाना चाहूंगा सर। आराम से बताओ। पहला सर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, दूसरा सर क्लिनिकल है और तीसरा मैनेजमेंट का इशू है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी इन्होंने सैंक्शन मांगा था सर सब सैंक्शन कर दिया सर। और स्पेशली सर आफ्टर योर इंटरवेंशन सर सीजीएमएससी एंड पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रही है सर। 75% रेनोवेशन काम पूरा हो गया सर। दूसरा सर क्लिनिकल पे है सर। क्लिनिकल में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लंबे समय से वहां पे हैं, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ भी लंबे समय से हैं जिनका आपस का एक वो है सर। तो उसको हम लोग अभी जस्ट ट्रांसफर उनका कुछ लोगों का प्रपोज करेंगे सर। मैं पर्सनली उसको देखूंगा सर। तीसरा मैनेजमेंट का इशू है सर। मेन जो सर मेजर जो न्यूज़पेपर आइटम है सर, आपने भी देखा होगा सर, वो मैनेजमेंट का इशू है सर। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे क्यू मैनेजमेंट है सर, मान लीजिए 100 पेशेंट की कैपेसिटी है बट हमारे पास 150 पेशेंट आ गए, तो एट द टाइम उस समय उनको ये लेना था इनिशिएटिव, एक्स्ट्रा काउंटर लगा देते सर, कुछ बेंच सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ा देते सर, कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्यू मैनेजमेंट कर देते। ये कल मैं बोल के आया हूँ। कल मैंने बेंच लगवाया सर। मैंने सर जो सामाजिक संस्थाएं जो आपने कल किया वो तो आज न्यूज़पेपर में आ गया सर। लेकिन फिर इसमें आज की जब आप वहां कल गए, राइट, ठीक है, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट कि चलिए हमारे लोग के इनिशिएटिव से आप गए, एसीएस कर रहे हैं, आपने कल देखा सर। तो कल जब आप वहां गए देखने के लिए तो इसमें एक आइटम निकला हुआ है, सिम्स जिला अस्पताल में दवा का संकट। व्हाई इज लाइक दैट सर? इसमें मैंने इसमें भी है वो दवा, तो जो अभी तो मैं सीजीएमसी की बाद में आऊंगा बात करना। हमको ये लग रहा है कि व्हेन यू आर पीपल आर रेगुलरली मॉनिटरिंग इन पर्सन टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, द सिचुएशन नो डाउट हैज इम्प्रूव्ड सर। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट सर। जो चीज एकदम खंडहर हो गई थी सर, उस चीज को हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस से जो भी ओएसडी वहां अपॉइंट किया गया उसने अपने एफर्ट से जितना किया सर। बट ये एक रेफरल हॉस्पिटल है सिम्स, राइट। अगर सिम्स नहीं ठीक है तो आप अभी समझ लीजिए जो नया वायरेंट कोविड का आ रहा है, व्हाट विल बी एबल टू डू इट सर, व्हाट विल यू एबल टू डू इट सर। तो आपको तो अपना जो बेसिक, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी देखते हैं, जब सिम्स का ये हालत है, जो रेफरल हॉस्पिटल है जहां से पूरे पेशेंट आते हैं ऑल ओवर द स्टेट के, अगर वहीं हम प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे सकते, अब जाके फैसिलिटीज आप ही की रिपोर्ट है लास्ट टाइम, इन व्हाट कैजुअल मैनर यू हैव सबमिटेड द फर्स्ट रिपोर्ट, वी आर पेन्ड विद दैट। आपने सब चीज तो वहां पहला जो हमने आपको कॉग्निजेंस लिया था आप ही ने सब कुछ एक मतलब लगता है कि एक जो भी रहा होगा क्लर्कल स्टाफ की बेसिस पे एक आपने परफेक्टरी रिपोर्ट दे दी जिसमें आपने हर चीज सही मानी। सॉरी सर वो आपकी रिपोर्ट है ऑन रिकॉर्ड सर, देखा वी हैड ऑब्जर्व। तो व्हाई डिड यू सबमिटेड दैट इररेस्पॉन्सिबल रिपोर्ट टू द हाई कोर्ट व्हेन वी अपॉइंटेड द कोर्ट कमिश्नर, व्हेन वी अपॉइंटेड द ओएसडी, देन द थिंग्स हैव कम। You should have said so. We were very much pained because you are a young officer. We expected very much. We have high expectations from you. You are doing a good job. But sometimes it appears to us that you go to the places, get the things, see the things. But what is the follow-up? What is the follow-up? That has to be. You go, you visit the place. It's very good. But what is the follow-up? You have to review the situation also. Now here, what we are finding that the SIMS condition, which was bad to worse, has improved 50%, right? Sir. Much more has to be done. Sir. As you have said, there are 3 phases there. Sir. Management है, clinical है, और infrastructure में तो 15 टन ट्रक का कूड़ा निकला वहां से। Sir. क्या था ये SIMS? ये क्या था SIMS? आप बताइए। ये क्या था? ये SIMS इस तरह का होता है? सर मैं कुछ बोलूं सर? बोलिए, हम तो बोल रहे हैं, हम आप दोनों ही बोलेंगे। हम क्या करेंगे भाई, जो चीज है सामने वो तो आपकी भी जो प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई यू आर द फर्स्ट, यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू हैव बीन रिसेंटली पोस्टेड इसके पहले, बट हम आपके ऊपर या नहीं जाते हैं। हमारा ये कहना है कि जो लोग वहां से ऑलरेडी थे SIMS के हेल्म ऑफ अफेयर्स, हु आर द स्टेक होल्डर, द डीन, द सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, व्हाट दे वर डूइंग सर। A person who was posted there, he could not stand, he could not come. आपने उस दिन देखा था ना? देखा था ना? सर। तो अब आप बताइए, जहां पर आदमी की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो वहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना लेथार्जिक अप्रोच उसका है, तो हाउ विल द थिंग्स मतलब विल बी मैनेज? बताइए सर। हाँ प्लीज बताओ।
सर सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ सर आपके इंटरवेंशन से सर इतना आप खुद मान रहे हैं सर 50% चीजें इंप्रूव हुई हैं सर। Mr. Abhishek, you won't believe in what situation we have to assemble here. सर कितनी चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये इनका पार्ट है, इनको let them do. But sometimes we realize that probably you people are sometimes found to be helpless in that situation because of the lack of infrastructure, lack of fund. Then we have to intervene. सर Then we have to come. Sir. Otherwise, the courts were closed. सर The courts, within 1 hour, I directed the Registrar General to get the things so that the court can be held. Sir. Everyone is on leave. But it is your duty, bhai. Sir. It is your duty. सर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है सर, Exactly. अकाउंटेबिलिटी That भी is मेरी what- है सर। क्योंकि जैसे कोर्ट से एक्सपेक्ट करता है ना आदमी सर कि आदमी भाई रात के भी हम 3 बजे भी जग सकते हैं Sir. अगर if the Sir. situation requires. So that is why when you are and you are such a sincere district magistrate, सर हैं? We appreciate your effort. But कहीं ना कहीं कोई चीजें आपकी थोड़ी सी दिक्कत करती है मुझको. सर मैं इसलिए सॉरी बोलूंगा सर, बीच में मैं लंबे समय विजिट नहीं कर पाया सर। हाँ, that is what. बट सर कल मैं गया जी. कल मैं इनको अलग से भी सर इन लोगों से बात किया, मैंने जो ट्रबल मेकर है सर उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वो कुछ है वहां डॉक्टर्स पर है. हैं, Last time कुछ we had got that. नर्सिंग स्टाफ है सर, और हमने साफ साफ बोल दिया, स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि अगर ये चीजें अगर 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक नहीं होंगी तो सर मैं पर्सनली इन पे एक्शन लूंगा सर। बिल्कुल. जो दूसरे जो लीगल एक्शन है, दूसरे जो पिनल एक्शन है उसमें इन पे कार्रवाई करूंगा। कुछ लोग हैं सर जो अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं, पूरा फोकस उस पे रहता है सर। That कुछ is all on पैथोलॉजी लैब चला record. रहे हैं। The chief secretary and that OSD has sent filed an affidavit. Sir. They are also finding the situations very difficult सर because इतने सालों से चीजें चली आ रही हैं. सर The things which are, आप बताइए उस दिन न्यूज आइटम में था कि वेंटिलेटर्स, न्यू वेंटिलेटर्स, they were compelled to be get rusted in the seepage. न्यू जो यूज तक नहीं हुए. सर 19 दिसंबर के बाद सीएस सर ने पर्सनली वीसी ली सर, उसमें हमसे कहा कि सीएसआर से और लोगों के सहयोग से कुछ वहां पे फर्नीचर Yes. कुछ बाकी चीजें प्रोवाइड करने, हमने प्रोवाइड किया। कल मैंने देखा सर वो फर्नीचर वैसे ही पड़ा हुआ। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं सर कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी तो उस फर्नीचर को हम Exactly. लगाएंगे, उसको लगाना था इनको। सर छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर, एक मेरे पास एक मरीज वहां पे आया, मैं काफी लंबे समय विजिट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे ड्रॉल में कॉकरोच है। तो मैं जब ड्रॉल बोला सर, कम से कम एक ड्रॉल में 20-25 कॉकरोच निकले। अब इसमें सर गवर्नमेंट कहेगी तब उस ड्रॉल से कॉकरोच निकलेगा सर। We are not blaming the government. Sir. We are not blaming the government. Any of the government. वही whether मैंने it was अलग से इनको previous बताया one or सर। the- It is the person. अगर आपके जगह ड्रॉर में जैसा कि आप बता रहे हैं चीजें हैं, तो ये तो कर्तव्य आपका है ना कि Yes, अपने sir. ऑफिस को कैसे रखेंगे यस अच्छा. सर, यस सर। So what these people are doing, Sir. the CMS and the dean, what they are doing, what they are doing, why they are not being taken to task. मैंने इनके जितने भी लोग हैं Right? सर, It is probably Right. you being the district magistrate, you have a powers to supervise the things, to make the things in order. Sir. But the persons who are responsible for the helm of affairs there, Sir. what they are doing, Sir. are they sleeping? Are Sir. they sleeping? Who Sir. are these people? Sir. You have to take सर to them to task. मैंने इनको 7 डेज का टाइम दिया हाँ. सर, और मैं हर दूसरे दिन जाऊंगा, सरप्राइज जाऊंगा सर, मैं बिना बताए जाऊंगा सर, और अगर ये 7 दिन में ठीक नहीं होती सर मैं खुद एक्शन लूंगा सर। That is और what, जो senior doctors हैं, उन पे- it is उनका for you recommend people करो। to decide. Yes. We want that the things should be ordered. The public at large Sir. should not be harassed. राइट सर, There should not be an ailing person who visits the hospital and he is told that here there is overcrowding and you have to go elsewhere. सर And he doesn't have money. Sir. He has to go to a private hospital. सर How he will be treated there? सर He will, और फिर वो उसका कुछ consequence होगा, life at risk है. Then who will pay for it? Who will pay for it? उसका मतलब कितना painful situation है. Sir. Supposing he is the person, supposing we the persons who are the stakeholders, अगर आज सिम्स में किसी भी जो एक हेल्दी आदमी है जो के पास सब चीज है Sir. और वो किसी वजह से वहां किसी वजह से जाता है, वो तो यहां से उठ के एयरलिफ्ट होके चला गया, और इस गरीब का जिसके लिए आज हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, Sir. हैं? इतनी बातें कर रहे हैं अपन कि हम वी टॉक अबाउट द पीपल, वी टॉक अबाउट द सिटीजन, सर but do are we conscious of the fact Sir. that whether we are providing them the basic amenities, the services which a common man needs? सर Institutions are there, whether it is the bureaucracy or is the executive or is the judiciary. We have to work for the welfare of the state. राइट Then it is our duty to see
दैट किसी का भी एक भी अगर कोई आदमी, भाई किसी की लाइफ एंड डेथ तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अगर वो बेसिक अम्यूनिटीज से वंचित रहे कि उसकी डेथ हो गई, तो हु विल पे फॉर इट? देन पीपल कम बिफोर अस फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन. Then the state defends, he was at fault. We had all the paraphernalia, we had all the infrastructure. He brought the patient at a very belated stage when he was dying. Then, तो हमारा आपका एफर्ट है या किसी का भी एफर्ट है, तो उसका एफर्ट इस तरीके से होना चाहिए कि जो चीज एक आदमी एंटाइटल्ड है बेयर मिनिमम, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम. राइट. आप करते हो अपनी एफर्ट, यू बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग इज विद इन योर पावर्स, बट वी आर a little bit disturbed as to what the dean, what is the medical superintendent doing. Have you asked them? Look here, when I came on inspection, I pulled the drawer and found cockroaches in it. What they were doing there? It is not your job. It is not your job. Everywhere the district magistrate or the court cannot go. Why have you not called upon them? After so much cleanliness drive which has been taken, then too this was the situation. This was the situation. They have to be taken to task. ओवरऑल सर वही है, ये लोग राउंड नहीं ले रहे. कम से क्यों कम नहीं ले रहे? तो you ask them, you ask the health secretary or the chief secretary. पूछा मैंने. If they are so casual in their approach, lethargic in their approach, that they keep their chambers clean and hygienic, and rest of the hospital is unhygienic, then they are at fault. Who is the superintendent? Who is the dean, and have they come? Sir. Of the SIMS? You are the dean. Have you heard what the district magistrate has said just now? What you people do? What you people do, sir? What are you doing? Just is it in front of you only? He spoke. Then we pulled a drawer. There were cockroaches found in that. Then what are you doing? Why are you not making round? Why the district magistrate has to make a surprise inspection in the hospital? Since when you have been posted? Probably just 2 months back only, I suppose? No sir, MS 2 महीने पहले सर. 2 महीने पहले. आप कौन है? डीन साहब. डीन है सर. तो आप कब से हैं वहां पर? 2021. तब 2021 से. आपने 2021 से क्या किया? अरे राउंड लेने से क्या होता है सर? आपने देखा जो हालत हो गई थी सिम्स की. आपने देखा सर, आप 2021 से हैं, आप क्या कर रहे थे? नहीं, पहले से तो बेहतर है. तो जो पहले के लोग वहां गए, जो पीड़ित होकर लौट के आए हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं मिली, उनके लिए क्या करेंगे आप? Sir, it is a lame excuse. No, sir. We don't accept your all these contentions. We don't accept. The district magistrate yesterday visited and he is saying कि आप बताइए एक ड्रॉर खोला, हम लोग चलें? Should we go? Leave the court. We will also visit. Let us see. अब now this is the situation which has come. You say that you are posted. देख लीजिए, अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब देख लीजिए, 2021 से हैं और कह रहे हैं सिचुएशन इंप्रूव हुई. आप देखिए क्या था वो एसडी जो ये गया, जो रोज एफिडेविट फाइल कर रहा है. अगर सिचुएशन अच्छी थी तो ये क्या हालत थी? Why the OSD was posted there? Probably people don't bother. You just see to it. Otherwise, you got it, right? Sir. We don't want to say much, sir, because you have to see he is posted there since 2021, right? And what you have observed yesterday only, he is trying to say that the things have improved. If all these things were good enough, then why the High Court has to intervene? Why these affidavits of the Chief Secretary and OSD showing that 15 टन जो है वहां से कूड़ा निकाला गया ट्रक से हैं? ये क्या कर रहे हैं? इसको देख लीजिए, जो चीजें हैं वहां पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एंड यू सी द थिंग्स एट वी विल डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो, है ना? क्योंकि देखिए कहीं भी है जो लोग अगर ये लोग नहीं काम कर सकते तो इनको हटा दीजिए वहां से, खत्म बात. सी टू एम. मैं इंश्योर करूंगा सर, मैं इंश्योर. भाई अब इनके रहने के बावजूद आपको आना पड़ा, राइट? सर, यू हैव टू मेक अ सरप्राइज इंस्पेक्शन. द कोर्ट ड्यूरिंग वेकेशंस हैज टू कम and he says that the things have improved. Probably there is something else going on. Right. People have to take the things all at your end. Sir. ठीक है ना? To make the things better. Right. And I don't want to see anything further again. Sir. Because I was just in the yesterday only it pinched me. I called my learned brother. Sir.
आई सेड कि रविंद्र भाई मामला नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो इसीलिए yesterday I asked the Registrar General to send this. Probably you people also see the news. Why? It is for us to see the news and then respond. It is for you people to take the first call. Yesterday we were going to assemble, so I said that we will send the message to the Registrar General, to the Chief Secretary, who will take. तो उतना आप चले गए कल यहाँ से इंफॉर्मेशन के बाद, वहां देखा, और आज फिर ये देखिए. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस हॉस्पिटल CGMCC? CGMSC? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सर. नहीं, वही का है सर. उसमें सर जो कहाँ का है वो सर परचेज करती है CGMSC मेडिसिन का सर. अब इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज सप्लाई कॉर्पोरेशन मेडिसिन सप्लाई करती है सर. वो. तो अब इसका आप देखिए, इसमें क्या ये इन्होंने लिखा कि वहां पर वो नहीं. हाँ, बताइए क्या क्या होता है कि 10% ठीक. और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का भी बड़ी हालत खराब है. उस दिन अभी अब क्या क्या मैं देखूं रोज. नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो हर दूसरे दिन जाता हूँ सर. वहां पे क्या है सर, अभी रेनोवेशन का थोड़ा काम चल रहा है सर, तो कभी कभी सीपेज हो रही है सर. जो कभी ओवर टैंक है सर, ज्यादा ओवरफ्लो कर गया तो सीपेज हो रही है. फिर मैं आज फिर से विजिट करने वाला हूँ सर. तुमको तो मेडिकल सेक्रेटरी बना देना चाहिए. दैट इज व्हाट. मतलब इफ एवरीथिंग इज पुट इनटू ऑर्डर व्हेन यू गो देयर एंड दीस पीपल फॉर द दे आर लास्ट डूइंग सर. दे आर डूइंग सर. 2021 से बैठे हुए हैं, तो ये तो बड़ी अजीब वाली बात हो रही है ना. दे आर डूइंग सर. दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग वहां पर हैं, दे हैव क्लोज देयर आईज. थोड़ा सेंसिटाइज करने की जरूरत है उनको सर. वो भी लगातार आफ्टर वी स्टार्ट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, देन देयर इज प्रॉब्लम फॉर देम. क्योंकि सारे रिसोर्स होने के बावजूद अगर ऐसा है, दिस इज व्हाट सर. This is what I am talking. Sir. Every resource is there. Sir. Funds are there. The government is saying that we have enough funds, and they are also trying to do it. Sir. And in spite of that, the people are not getting the benefit of it. ये सबसे बड़ी concern की बात है ना. Sir. Where does the fund goes? Sir. Where does the fund goes? बताइए, इतना अगर आपका है, वहां सब कुछ है, और इसके बावजूद अब ये आदमी, बताइए, जिस आदमी को वहां दवा नहीं मिली कल, तो कहाँ गया? उसके घर से किसी ने पूछा वो कहाँ गया? उसको मिला, दवा ना मिला, रास्ते में मर गया, क्या हुआ? व्हाट इज? बताइए, इस समय जो हालत है आपके यहाँ, प्रॉब्ली अभी तो ये सिचुएशन. दूसरी चीज भी मैं आपको बताता हूँ. आप तो सोचेंगे कहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया मैं, है? मतलब ये इतनी अलार्मिंग और सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो गई है इस समय कि हमें समझ में नहीं आ रहा है. अभी आप पढ़े होंगे, अभी दूसरा PIL है रेलवे क्रॉसिंग का. अब उसमें भी तो आप नहीं जा सकते ना. वहां तो भाई है, रेलवे ऑफिशियल्स हैं, DRM है, सब है. वो पहले वहां पर फुटब्रिज नहीं था, तो हम लोग ने उसका, फुटब्रिज नहीं था ना, तो उसमें लोग रेलवे बच्चे क्रॉस कर रहे थे इंजन के ऊपर से, अगर आपने देखा होगा. अब क्या हुआ कि जो है वो थोड़ा बहुत पुलिस लगा, फोटो खींच के हम लोग के पास भेज दिया गया, भाई गार्ड वार्ड लगा दिया, 2 दिन हो गया. उसके बाद फिर वही सिचुएशन हो गई. A woman was crossing. They are also at fault. They know that their life is at risk. The people of this country are only conscious about their rights, but not about their duties. They have to perform their duties also, and then take the privileges, claim the right. They have to see. अब बताइए, इतना करने के बाद एक लेडी, I saw it, कुछ चीजें हटा देना पड़ता है, कहाँ तक करें? पहले तो मैं न्यूज़पेपर देखता नहीं, जल्दी देखता नहीं, क्योंकि उससे दिमाग सुबह का एकदम, आप समझ लीजिए, वही हो जाता है. बट वी हैव टू सी अ ग्लिम्स ऑफ इट, कि कहीं किसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमारी. तो इसलिए वो हम लोग देखते हैं. अब वो शी वॉज वॉकिंग जस्ट इन द मिडल ऑफ द लाइन ट्रैक, और उसमें इधर से उधर कर रहे थे. तो अभी हमने देखा, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पार्किंग में आप रेलवे स्टेशन पे देखिए, उसी के नीचे है जहां वो दिखाइए इनको, देखिए, यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीट पार्किंग का पचड़ा, रेलवे प्रबंधक की शय पे ठेकेदार कर्मचारी. बताइए, देख रहे हो? जस्ट उसी के नीचे देखिए. आप कितना इंस्पेक्शन करोगे भैया? सर, आई विल टॉक टू DRM. नहीं, यू विल डेफिनेटली टॉक टू द DRM. वी आर ऑल्सो कॉलिंग अपॉन देम ऑल्सो. बताइए, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स. रेलवे स्टेशन पे वी आर टोल्ड
and we see from the newspaper items that people who travel to this place and they have to take conveyance to go to their destination, they are not being the proper facilities. उनकी conveyance से गाड़ी घोड़ा वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है. अब बताइए ये probably 10 days back, 10 days, एक हफ्ते 10 दिन हाई कोर्ट के बंद होने के बाद था या क्या था? I saw a newspaper, a lady who has came from the place from at that airport, Raipur airport. She was in a family where she was having a child. She sat on a car. She was asked to come outside the car because of their some उनका कुछ prepaid और सबका कुछ problem था वहां पर. And she was not allowed to take another car. 7 days back. Yes, 7 days, another car. And she has to walk down for about 2 kilometers in that manner. What is going on? क्या कहते हैं? ये क्या हो रहा है? बताइए. मतलब ये सब चीजें क्या कर सकते हैं अपन? बताइए. अब you have to see. You are all alone cannot. Persons who are responsible, who are the stakeholders, they have to take care. भाई you people talk about the common man, हैं? हर आदमी को सुविधा देने की बात होती है, हर आदमी के लिए सब कुछ करने की बात होती है. अगर हमारे घर का कोई आदमी इस तरह से हो जाए तो फिर देखिए, हम लोग तो सब जमीन आसमान करते हैं क्योंकि वीवीआईपी का आदमी है वो. और एक कॉमन आदमी आया जिसका कोई नहीं है और उसको गाड़ी में से उठा के निकाल के दूसरी टैक्सी नहीं लेने दिया उसको, और बाद में शी वाज आस्क्ड टू कॉम्प्रोमाइज द मैटर. इट वाज ऑन द न्यूज़पेपर ओनली. कैसे काम चलेगा भाई? कैसे काम चलेगा? अगर इस चीज को हम लोग छोटी छोटी चीजें को नजरअंदाज करते रहेंगे तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है. भाई अब बताइए, सुबह से मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? भाई वी आर नॉट कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स. वी हैव अदर वर्क आल्सो. वी आर सीज्ड विद द जजमेंट्स. वी हैव नॉट गॉन लीव. भाई पीपल आर वेटिंग. They are inside jail. They have to, their cases has to be decided. And we are indulged in all these things. हम इसके लिए आके आपसे सुबह से कर रहे हैं, जहां सब लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो 2021 से बैठे हैं, फिर और कोई बैठा है? तो कौन कैसे काम चलेगा? तो इससे तो लगता है कि everything is at chaos, कि there is no nothing. Things will improve, sir. चलिए, we hope and trust that you will improve the situation, but you have to get the things. अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और जहन में आई बात कि probably न्यूज आइटम में तो था. What are your preparations regarding the new variant COVID which you have? बताइए डॉक्टर साहब. प्रिपेयर कर लिया है. आप 100 से 250 पहुंच गए तो आपने वापस कर दिया. यहाँ 10 बेड का है. 10 बेड होता क्या है? इसको भी मैं सॉरी टू से अखबार ने लिखा है उस दवाइयां हम लोग पूरी कोशिश करते हैं. देखिए, वी न्यूज आइटम वी नो हाउ द न्यूज. वी ऑल्सो रिक्वेस्ट आवर मीडिया पर्सन्स ऑल्सो that they should do healthy journalism. The journalism should not be in such a manner it should malign or insult any person. We are here for the public cause, and we have to see, all the stakeholders have to see that the public cause is served. It is a welfare state. We talk about the welfare state. We don't go by what they have published. But अगर उनके में 10% की भी सत्यता है तो वो क्यों गलत है? वो तो ठीक है कि समथिंग चीजें को एग्जैजरेट करके होता है कभी कदा, बट एवरी नाउ एंड देन ये तो उनका नहीं है. अदरवाइज दे विल बी पुट एट टू टेक इन टू टास्क. व्हाई आर यू पब्लिशिंग ऑल दिस न्यूज आइटम? वी विल टेक देम टू टास्क इफ इज सो रिक्वायर्ड, बट दैट इज नॉट देयर. जो वो कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता तो है ही है. आप सामने ही देख रहे हैं. आप जब गए कल, इतना सब होने के बावजूद आपको ड्रॉर में इस तरह की चीजें मिली, तो फिर इसमें इनको हम क्यों ब्लेम करेंगे? तो इसलिए आप इसको देखिए अपना तरह. मैं देखिए, इसको मैंने 17 लगा रखी है. मैंने आज इसको इसलिए लगाया क्योंकि ये कनेक्टेड था. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन. तो यू हैव टू सी एंड यू हैव मिस्टर शरण, आप जब तक यहाँ पर हैं इसको आपको सिम्स को ध्यान रखना है सर. क्योंकि देखिए, ओएसडी को हम लोग ने बड़े कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में लगाए रखा था, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल के कहने से, है ना. अब प्रॉब्ली द न्यू रिजीम हैज टेकन has
taken over the charge, but the Advocate General का भी कोई वो नहीं हुआ, appointment नहीं हुआ. So we pose the matter as on 17th, and you file your personal affidavit. I also ask the Chief Secretary. Sir. You are in direct in touch with them, Sir. right? Sir. So you have to see that all the medical facilities, SIMS as well as district hospital, जो आपका within district Bilaspur है. Sir. So you have to see the things that it is put up to the mark, Right. right? And whatever these officials are there, you have to take. आपको जो उनको करना है, उनको सुधारने के लिए करना हो, आप करिए. We are not at that place. This ये जो parking का है, Sir. that railways as well as the airport also complaints coming, district उसका. और जहां तक उसका सवाल है, क्या नाम है, रायपुर का है, we will pass separate orders. है ना, वो भी वो लाए क्या, लाए क्या? Who is the head of CGMSC? Mr. Chandrakant Raman. He is 2017 batch आई है sir. He is posted at Bilaspur or Raipur? Raipur sir. I will talk to him sir. Over. Secretary level के हैं? No, director level. Director level. He is 2017 batch. हाँ, तो उनका पर्सनल एफिडेविट मांग लेते हैं अपन, उनसे उनका पर्सनल मांग लेते हैं, अभी इसी में मांग लेते हैं ना. इसमें लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, चलिए लिखिए. The taking into cognizance of the newspaper of the news item published in the local newspaper Bilaspur Bhaskar, dated आज का है 28 December, wherein there was found to be shortage of fund, and due to which the required medicines could not be supplied to the ailing patients. We had assembled today, and in the present PIL, which was posted for 17th of January 2024, and but yesterday also there was a news item published with respect to the SIMS, in which the women who were in a family way were standing in the queue, but some of them have to return because of non-availability of the staff, etc., for the treatment. And we directed the Registrar General of this court to send the news item to the Chief Secretary, who, in persons of the same, directed the District Magistrate Bilaspur to visit the situation, visit the SIMS hospital, and he has visited the same. But today again, the news item was published regarding the lack of fund, and hence we called upon the District Magistrate as well as District Magistrate. आप कौन है? SIMS Dean of the SIMS, who is also नाम लिख दीजिएगा. Present, the District Magistrate has informed us that he is personally taking into the monitoring the situation and the working of the SIMS in persons of the directions given by the Chief Secretary of the state, and he has assured that though there appears to be some internal problem in the working of the SIMS, but he would take the things in order, take necessary steps for bringing the things in order. And considering the assurance given by the District Magistrate, we let the matter be listed as has been directed by this court earlier on 17th of January 2024, on which date the District Magistrate shall file his personal affidavit as well as taken affidavit. In the meanwhile, we further direct the Chief Secretary to also be in continuously touch with the District Magistrate, so that he may not face any difficulty with respect to the compliance of the earlier court's order dated such and such. And इसका ये भी कहना है, ये इनका डायरेक्टर managing director CGMC shall file his personal affidavit with respect to
the news item published in the local newspaper, on which we have also taken cognizance assembled today, with respect to the availability of the funds to the district hospital as well as SIMS को भी यही देते हैं, सिम्स है ना, एंड ठीक है, और आ जाएगा 17 मार्च को, वही आ जाएगा जनवरी को, और इन द न्यूज आइटम, फिर इस वाले पे आएगा मेरे इतना, दूसरे वाले में जो रेलवे वाला है, ठीक है ना, we have also noticed a news item which has been published with respect to the parking problem at the airport and the railway station also in district Bilaspur, and we direct the district magistrate to examine the situation, and in coordination with the railway authorities, इसमें रेलवे के कौन है, अब कर लीजिए, सुनी तो लिया, ये दूसरे वाले में भी रेलवे का तो कोई है नहीं इसमें, रेलवे का कोई नहीं होगा, ये तो हमने अभी चलते चलते इसको देखा, इसलिए मैंने इसको बोलने वाले है ना, और इसमें दूसरे वाले में देख ना, ये रेलवे वाले में, इसको भी प्रीपोन किया था हम लोग ने, डेट लगाया था, इसको लगाया था, इसमें रमाकांत मिश्रा साहब नहीं है ना, चलो उनको ध्यान रखना, इसको भी हम लोग ने लगाया था, 5 जनवरी को लगाया है, 5 जनवरी को लगाया, दिस मैटर, ये रेलवे वाला वॉज पोस्टेड बिकॉज ऑफ द न्यूज आइटम, वी हैव कॉल्ड अपॉन द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस केस ऑल्सो एंड गेट द मैटर लिस्टेड, है ना, एंड रेलवे अथॉरिटी में कौन कौन है, क्या हुआ? नहीं सर, all the general are sitting there belong to that SIMS only, ना, रेलवे का कोई नहीं है, रेलवे को नहीं, एक्चुअली मैं चलते चलते अभी बोला इसको जस्ट, तो इसमें ये लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तो जो लिखा है लिख दीजिएगा, इसमें कौन है बिलासपुर का, साउथ में, द DRM, respondent number 3 is directed to file his personal affidavit in the matter with respect to the news item which has been published. ये तो उन्हीं के उसके आता होगा है ना, today, and let a copy of this order be also sent to Shri Ramakant Mishra for his necessary information and compliance, है ना, इसको भी कर दीजिए, और ये 5 जनवरी वोट 5 है, ठीक है ना, और you see to it, just talk to them by Bilaspur, so you will be the district magistrate, ठीक है ना सर, बढ़िया करके लाइए सब, ठीक है ना सर, करके लाइए, लोग दुआएं देंगे और क्या, दैट इज व्हाट, ये एक ऐसा है काम की जिसका भाई वी हैव टू सी द थिंग्स, चलिए, एक वो 17 को हो गया और ये वाला 5 को हो गया, है ना, ये तो 17 को हो गया, तो 24 5, ठीक, थैंक यू सर।